Hello friends, good afternoon and welcome to Raj Malhotra's IAS. So we are back with our current affairs session. Every day of the week you are receiving a lot of current affairs from our side. I, Snigdha, discuss the current affairs related to your international relations part as well as the history portion, right? So in that context, this is our 14th week of our discussion on the current affairs, and for today we'll be discussing many topics. Some of them are missing here, right? So we'll be discussing a number of topics, total in 7. You might have received in the link also. So we'll be discussing multiple topics that are relevant from your mains as well as prelims perspective, right? So stay tuned for the discussion. It's going to be very useful for you, right? So सबसे पहले the first important topic for today is the US India trade ties, right? So there is a news that US has surpassed China to be the largest trader of India. ठीक है, till now the largest trader was China, but now the news is showing that USA has crossed even China to become the India's largest trading partner. ठीक है, here the ministry has also given some data. So in 2021 India US trade was $119 billion, right? Almost 120 billion, you can say. Okay, let me show you in diagrammatical form. So in 2020-21 the trade was, you can say, almost $120 billion, right? Now it has risen, right? So I mean these are the current figures, right? अगर आपने पिछले का देखना हो, let me just rephrase it for you. So it used to be around $80 billion earlier, right? Now it has increased to $120 billion, right? So that is the progress that India US trade has made, over the years, right? और China के साथ जो data presented है, that with China we have a trade of, you can say, $115 billion, right? So मतलब चाइना भी अब हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, बट नाउ यूएसए इज अमंग द ट्रेड पार्टनर्स. So what is the relevance of this news? So this news shows that the economic ties of India and USA are expanding a lot. Last video maybe I showed you the relevance that USA is a big investor. It wants to leverage the market of India and India needs investments. So उस तरीके से भी we discussed India US investment agreement. In that way also economic ties were very important, and now here you are again seeing a boom in the bilateral trade. ठीक है, दोनों countries are working very effectively in their economic sphere, and as a result of that you are seeing an increase in trade, right? So it also shows, firstly it shows the significance with the US of India's tie. Secondly, it also shows that India is reducing its dependency on China on the trade front, right? हमारा ट्रेड जो है now it's boosting with other countries. So in response to that, next day after this news was published, Chinese ministries claimed that China is still the largest partner, राइट? सो वहाँ पे आप कह सकते हैं ये टसल क्रिएट हो रही है अब, बट वी हैव टू बिलीव व्हाट आवर मिनिस्ट्री सेज, राइट? सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस article is very important for India US ties and India China ties also. You should use the data from this article, right? Okay, right? Now the next important topic for today's discussion is going to be the UN peacekeeping force. आपने बहुत बार न्यूज़ में you might have heard about the UN peacekeeping missions,
right? NCRTs be, if you read, you have read it there also. So now there is an international day of peacekeepers. All the peacekeepers or the personnel who, you know, contribute in the UN peacekeeping force, it is a day celebrated to achieve their contributions, right? So अब इसमें हमारे लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स और मिशंस के बारे में कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद करनी है, प्री और मेंस में कहीं भी पूछी जा सकती है, सो दैट वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट दिस इंटरनेशनल Peacekeepers Day is celebrated on 29th May, right? And this is the day when the first UN peacekeeping mission was established. ठीक है, इसीलिए 29th मई को ये दिन रखा गया, because that was the first time first UN peacekeeping mission was sent or established. So basic पहले ये बताइए कि UN peacekeeping से we can understand, what do we understand by UN peacekeeping missions. ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, right? So if you have read world history or world international affairs, so you must be aware that world witnessed the World War I between 1914 to 1919, right? Going from there, it also witnessed World War II, right? 1939 to 45, right? So there was lot of death and destruction that happened as a result of these wars, right? So there was, you know, an understanding among the world leaders that we need to establish a system, a institution to provide peace and stability to the entire world. ठीक है, so that is when firstly League of Nations was established, and after that United Nations was established, right, to provide that peace and stability to the entire world, right? Now this United Nation has number of bodies, agencies, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारे 6 organs हैं इसके, and there are number of bodies and institutions, agencies that are linked to UN or working for UN or under its guidance, right? So one such important organ of UN is the UN peacekeeping force, UN peacekeeping mission. So in every area of the world where there is lot of disturbance, political disturbance, terrorism activity, or any kind of famine, drought की वजह से political instability है, because of all these reasons there can be political stability in various regions, जैसे कि आप सीरिया, अफगानिस्तान, and various such places you see in news, जहाँ जहाँ there is political instability, that means they don't have a functional government at their helm or at their head. There you will see that there is lot of violence, and that is where UN peacekeeping forces are also working to maintain peace and human rights in those areas, right? So that is basically what is your UN peacekeeping, right? I hope you have understood that, right? That is why it gains relevance also. So such a first peacekeeping mission was established on 29th May 1948. 1945 में तो UN ही establish हुआ, and after that slowly you see emergence of UN peacekeeping force in 1948, right? And ये 29th May को हुआ था, इसीलिए International Day of Peacekeepers is celebrated there, right? Now the theme of this year's peacekeeping day is people, peace, progress, the power of partnerships, right? ये आपको थीम जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि कोई क्वेश्चन आए प्री वगैरह में तो यू कैन आंसर. हरियाणा का प्री आ रहा है, पंजाब का आ सकता है, तेलंगाना का आ सकता है, एवरीवेयर दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? नाउ सम अदर डिटेल्स अबाउट द यूएन पीसकीपिंग फोर्स. अब देखिए जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, दैट इज 193 मेंबर स्टेट्स, दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूएन पीसकीपिंग फोर्स, राइट? इसका बजट इज अराउंड 7.23 बिलियन डॉलर्स, राइट? इसका फंडिंग और इसकी फाइनेंसेस यहाँ रेंज तक जाती है, राइट? टोटल इसके पास पर्सनल कितने हैं? ऑलमोस्ट 1.1 लाख, यू कैन से मोर देन 1.1 लाख पर्सनल आर देयर विद द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, राइट? एंड उसके बाद सी, so they are indulged in, you know,
at present there are 16 missions that are going on in 4 different continents. ठीक है, at present UN peacekeeping forces involved in 16 different missions, right, and 4 continents. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया ही है, दारफुर रीजन, अफ्रीका का रीजन है, दिस मैप ऑफ अफ्रीका इज देयर, दारफुर रीजन, a troubled region. So largest mission भी UN का in Darfur region is present, right? It is being conducted in the partnership with AU, that is African Union, right? So that are the basics. इससे ज़्यादा आपको details की ज़रूरत नहीं है. That would suffice your purpose, right? Now there are 3 principles that are related to the functioning of your UN peacekeeping force. What are those 3 principles? Firstly, consent of all parties. Whenever UN peacekeeping force is sent to some area, so they work on the basis of consent, कि उनको इजाज़त दी जाए उस एरिया में ऑपरेट करने के लिए, they should get the consent, right? So firstly it will work on the idea or the principle of consent, right? And these peacekeepers, they work on the idea of non-use of force. जैसे इंडिया में है no first use of force, in the similar fashion this UN peacekeepers, they also work on the idea of no first use of force, only they will use force in self defense. ठीक है, peacekeeping का मतलब ही यही है कि वहाँ ये peace and stability establish करने गए हैं. If they will themselves start using violent means, then where will the peace be, right? So the first principle for them is that they do not work on using arms and weapons to create stability. They use diplomatic ways. Only if they are attacked sometime by the terrorists or the the violent parties, only then in self defense will they use force, right? So that is again important. And then impartiality. So see, UN peacekeeping मतलब this force, अगर ये force किसी area में गई है, so that means this force is not from that area, outside force है. So now it has to ensure the interest of all the sections of that society. It cannot take side of any particular or any one section in the society where it has gone to establish peace. उसको हर एक section of that society it has to take care of. So it will work on the principle of impartiality, right? So that is why it is important. 3 principles, remember that. Now compensation. See, this is very important term. इस पे question आ सकता है आपको, right? जो peacekeepers है, they are also referred to as blue berets or blue helmets. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, येलो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन क्या है, ब्लू हेलमेट्स कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई येलो शर्ट्स, येलो अम्ब्रेला, ऐसे ऐसे अम्ब्रेला मूवमेंट क्या है, येलो शर्ट्स क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इन द सिमिलर फैशन ब्लू ब्रेड्स क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे. दैट इज़ वाई दिस इज बीइंग रेफर्ड हियर. सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज कॉल्ड एज ऑल्सो द ब्लू ब्रेड्स. कहा क्यों जाता है ऐसे? बिकॉज दे हैव लाइट ब्लू ब्रेड्स और हेलमेट्स दैट दे यूज. ठीक है, आप कहीं भी गूगल करके देखिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स की इमेजेस, यू विल सी दैट दे हैव ब्लू हेलमेट्स बिकॉज ऑफ विच दे आर कॉल्ड सो, राइट. सो सारे मेंबर्स पीस कीपिंग फोर्स से कहाँ से आते हैं? सो ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन ऑन वॉलेंट्री बेसिस दे कॉन्ट्रीब्यूट. ठीक है, जिसकी मर्जी है, जो यूएन का मेंबर है, दे विल they'll send their members to this area, right? Now somebody is asking a doubt that why UN did not send peacekeeping force to Ukraine. Ukraine is fighting for self defense. So see, इसके 2 reasons है. Firstly, Ukraine says that we are an independent country and the government is still functional there. Kerensky के अंडर Ukrainian government is still there. ऐसा नहीं है कि वहाँ government नहीं है. So the Ukrainian government says that we can fend for ourselves. We have our forces. You can provide us the military resources, but we will fight for ourselves. Firstly. Secondly, Russia has also warned against any international interference. रशिया ने क्लियरली कह दिया है कि अगर बाहर से यूएस, यूएन, ब्रिटेन, फ्रांस कोई भी
यूक्रेन को सपोर्ट करने आएगा, देन रशिया विल इंक्रीज द ऑफेंसिव, राइट. सो इसी वजह से फर्स्टली बिकॉज यूक्रेनियन गवर्नमेंट इज देयर, सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स विल नॉट कम देयर, राइट. सो नाउ पीस कीपिंग के मेंबर्स कहाँ से आते हैं? यूएन के मेंबर नेशंस में से ही पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाती है, राइट. इसके सिविलियन स्टाफ भी जो हैं वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं. अब जैसे अगर आप आईएफएस सर्विसेज में जाओगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी पोस्टेड इन यूएन, right, UN agencies. Even if you are not IFS officer, even IAS, IPS, IRS officers are also posted sometimes. Even Indian audit account services are also posted into the UN के ऑपरेशंस में, हमारे जो UN पे वर्क्स है वहाँ के लिए. सो वो जो सिविलियन स्टाफ होगा पीस कीपिंग ऑपरेशन का, वो यही सिविल सर्वेंट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वही सर्व करते हैं, right. That is what all about the composition of UN peacekeeping force, right. Now the contribution कि different countries का क्या contribution है UN peacekeeping force में. So see यहाँ top 5 providers के हमने नाम लिखे हैं, right. सो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए की है, ऑलमोस्ट 28% कम्स फ्रॉम यूएसए, राइट. देन it's from China, the second largest contributor, around 15%. Then Japan, finally Germany and UK. Germany and UK. So this is how the various countries are contributing to the UN peacekeeping missions, right. Now the largest peacekeeping operation, that is in South Sudan, ठीक है. Then there is in the Democratic Republic of Congo, DRC. आप देखिए मोस्टली अफ्रीका में है इनके मिशंस, बिकॉज अफ्रीका में most of the times the political government is not very stable. बहुत ट्राइबल conflicts भी हैं, sectoral conflicts are very high in Africa. Intra-country conflicts are also very high. So because of that Africa is one of the most unstable region you can say. तो देखिए आप majority of you will see are in Africa only. South Sudan भी अफ्रीका में है, DRC is in Africa. Then Central African Republic, CAR भी जिसे कहा जाता है, there is the next largest mission. Then Mali, again African nation. So majority of they are in African nation. उसके बाद ये start होते हैं non African nations, that is Lebanon or Israel, Syria and Cyprus, right. So that is how this is happening. Now the next important issue for our today's discussion is the Indus Water Treaty. बहुत important है, mains में भी इस पे analytical questions can come on this and pre में factual questions can come, right. So all those facts we will cover today, right. So now what is Indus Water Treaty? Basically it divides the waters between India and Pakistan. It divides water between India and Pakistan. As you can see the map, Indus River जो है इसके water को divide करती है between India and Pakistan. And it was brokered by, हमेशा there is a mediator that is present between India and Pakistan on the Indus water issue, and that broker, that mediator is World Bank, right. So this is brokered by the World Bank, right. So अब इंडस की जो भी इंडस की ईस्टर्न रिवर्स हैं, they were given to India, यानी कि आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, all these three rivers, the eastern rivers, they have been completely given to India. And the western rivers, that is Jhelum or Chenab, they were given to Pakistan under the Indus Water Treaty, right. Also देखिए कि आप इस अरेंजमेंट से इंडिया को जस्ट 20% ऑफ द वाटर मिला है. मेजॉरिटी ऑफ द वाटर, दैट इज 80% ऑफ वाटर, हैज़ बीन अलोकेटेड टू पाकिस्तान बाय दिस ट्रीटी. स्टिल पाकिस्तान कीप्स ब्लेमिंग इंडिया फॉर नॉट for misusing or for not delivering them adequate quantity of waters under the treaty. But you already see the treaty is iniquitous in the sense that majority of the water resource has been given to Pakistan itself,
राइट, तो वो अपनी मिसमैनेजमेंट का बोझ इंडिया के ऊपर लगाते रहते हैं. इट्स देयर फॉल्ट दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग डैम्स, दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और they are not managing their water resources well, that they are not able to satisfy the water needs of their population. The role is not played by India as they portray it in the international sphere, right? So rest is that India has also been given the power to create run of the river projects on the western rivers. ठीक है, so मतलब हमने see, let me just explain you this thing again. So we have river Indus, western rivers, that is Jhelum and Chenab, that will go to Pakistan. पाकिस्तान वेस्ट में है तो रिवर्स भी वेस्टर्न उनको मिलेंगी. ईस्टर्न रिवर्स, दैट इज रावी, बियास, सतलुज, दीज हैव बीन गिवन टू इंडिया. ठीक है, इन एडिशन टू दिस इंडिया हैज बीन गिवन टू मेक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, run of river projects on Jhelum and Chenab. Run of the river projects क्या होता है कि रनिंग वाटर पे इंडिया कैन क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बस कोई डैम्स या स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता वहाँ पे. जैसे पानी आ रहा है उसको यूटिलाइज करके इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट कैन नॉट स्टोर दैट वाटर, राइट. What's the role of World Bank in water dispute? See, at that time in 1960, this treaty was signed, Indus Water Treaty. This was signed in 1960. At that time, we used the help of World Bank to create a mediation ground between India and Pakistan. तो हम क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक का रोल यही है यहाँ पे कि एज अ मीडिएटर एक्ट करे, ताकि इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली इफ दे आर नॉट एबल टू टॉक देन वर्ल्ड बैंक विल डिसाइड ऑन द मैटर्स. ठीक है, जैसे पाकिस्तान ब्लेम करता रहता है कि इंडिया उनको वाटर नहीं प्रोवाइड कर रहा, एट दैट टाइम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक विल सिट एंड गिव हिज और हर रिपोर्ट कि ऐसा कुछ नहीं है, राइट. ऑल द अवेलेबल वाटर इज बीइंग गिवन. वाई वर्ल्ड बैंक? उस टाइम पे देखिए जितने इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं आज की डेट में, दे वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम. मेजर इंस्टीट्यूशंस वर वर्ल्ड बैंक, IMF एंड सम एजेंसीज ऑफ UN ओनली. सो एट दैट टाइम दिस यूज्ड टू बी द डोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट वाज प्रेजेंट. सो इट वाज मेड एज द पार्टी हियर, right? So that is all about your Indus Water Treaty. ये facts आप थोड़े याद रखिए, this will help you answer various questions, right? So the next very important topic that we will discuss today is the Shri Narayan Guru, a personality from your modern history that is very important for you to cover. ठीक है, तो इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स, इनकी फिलॉसफी के बारे में, इनकी बेसिक डिटेल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल इज फ्रॉम वेयर डज ही बिलोंग. ठीक है, तो आप सभी लीडर्स की प्लेसेस देखते हैं तो इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाज केरला. ठीक है, केरला में नारायण गुरु टुक एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, राइट, स्पेशली अंडर द कास्ट सिस्टम. बचपन में अंबेडकर की तरह इन्होंने भी he experienced lot of caste based discrimination at his childhood. So as he grew up as an adult, he wanted to work to bring about social reforms in the country or in his state, that is Kerala. So that is why his contribution to elevate the issue of caste system is very important. As it is said, he belonged to the Izava caste. So ये caste थी जिसकी rights के लिए he will speak up, right? So he experienced discrimination from the upper caste of the society. That is why he established the philosophy of social equality, education for all. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अपर क्लासेस को एजुकेशन मिले. एवरी सेक्शन ऑफ दिस, एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी शुड हैव द राइट टू गेट एजुकेटेड, right? So that is why education for all was also his idea.
and then spiritual enlightenment, so that everyone should work on getting some awareness in their lives. ठीक है, तो equality and every right to all, that was his basic idea. Right now, see, he also gave this important slogan, one caste, one religion, one God for all. राइट ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, या पूछा जा भी सकता है कि ये स्लोगन किसने दिया था, या केरला के सोशल रिफॉर्मर कौन थे एट दैट टाइम. द आंसर वुड बी नारायण गुरु. Narayan Guru, he gave this idea of that there is only one caste in the entire world, there is only one religion, and there is only one God, and that should be your, humanity and humanism you should focus on. राइट कोई कास्ट बेस्ड डिवीजन मत करो, कोई रिलीजन बेस्ड डिवीजन ना करो, सबको एक जैसा समझो. राइट दैट वाज हिज बेसिक आइडिया. राइट सो नाउ he also consecrated such a first temple of Lord Shiva, where the first idol of Lord Shiva was placed by a non-Brahmin. नहीं तो आपको पता ही है, you have also read about temple revolts. So initially the lower caste people, they were not allowed in the temples. So Izawa was also a lower caste, they were also not allowed. So he made such temple of Lord Shiva where non-Brahmin person established the idol or linga there. Right, so that was a very significant achievement. After that, he sparked off the anti-caste revolutions within Kerala and spoke against the dominance of the upper caste Brahmins. Right, so और temples में क्योंकि इतनी discrimination होती थी, so instead of keeping idols in temples, he started keeping mirrors there. Right, showcasing that God lies within us. ऐसा नहीं है कि आप idols में, idol worship is a characteristic of Brahmin religion. ठीक है, so see, let me just explain you these temple movements. इसे आप you read in detail in your book. Right, so temple movements का क्या मतलब है, यहाँ there was Brahmanical superiority everywhere, they used to rule the entire society, all the rituals used to be performed by them, all the money used to be kept by them. Also idol worship was promoted, idols होंगे तो ही rituals होंगी. Right, so that kind of context was there, and in all this the lower caste, the so-called lower castes were not given any entry. Temple entry was banned for such people. Right, so इसीलिए you see जितने भी social reformers हैं who took up the idea of equality and objected caste based divisions, they all they all were opposing rituals, they were opposing idol worship, they were opposing Brahmanical superiority. ठीक है, जितने भी रिफॉर्मर्स आप पढ़ेंगे रिलीजन बेस्ड, पेरियार लाइक यू विल रीड इन तमिलनाडु, वो सब वर अगेंस्ट रिचुअलिज्म, idol worship और Brahmanical superiority. Right, so इसीलिए he used to keep mirrors in the temple instead of the idols. He used to say कि God आपके अंदर है, God हर इंसान के अंदर है, try to see the God in the human, not in the stones. Right, that was his thought. Right, so an important organization that he established to spread his message was Shri Narayan Dharma Paripalana Yogam. Shri Narayana Dharma Paripalana Yogam. Right, Shri Narayan Dharma Paripalana Yogam. Right, that was the society that was established by him, and he also established 40 temples across the state that were open to people from every caste. ठीक है, so उन्होंने ऐसे temples create किए that are open to every other caste. It is said that caste based discrimination is still existing in
today's society. Absolutely true. Caste based divisions अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, आप अपने घरों में ही देख लीजिए. There will be many people at whose home the glasses or the utensils for the house help, ठीक है, हम कहते भी मेड है उन्हें, मेड, वर्ल्ड इज इटसेल्फ, यू नो. सो उस उनके लिए अलग यूटेंसिल्स रखे जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी. वी थिंक ऑफ देम एज लोअर देन आस, लोअर देन अवर कास्ट, राइट. सो आज भी आप विलेजेस में, रूरल एरियाज में जाएं तो हर जगह यू विल सी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैपनिंग, ठीक है. चूड़ा चमियार ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं दैट आर वेरी मच प्रोहिबिटेड बाय इंडियन लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज आर स्टिल यूज्ड इन सम एरियाज ऑफ अवर इंडियन सोसाइटी. ऑल्सो आप देखते ही हैं बहुत सारे दलित पीपल जो होते हैं, वेन एवर दे ट्राई टू यू नो, जैसे आपने सुना होगा कि दलित दुल्हा, ही वॉज ऑन हिज यू नो घोड़ा पे जब वो अपनी बारात लेके जा रहे होते हैं, एट दैट टाइम ही इज बीटन बाय द अपर कास्ट पीपल. तो कास्टिज्म आज भी चल रहा है इंडिया सोसाइटी में बहुत हाई लेवल पे, बट दीज वर द इनिशियल अटेम्प्ट्स टू यू नो डिसॉल्व दिस कास्ट सिस्टम. तो आप देखिए कि पुराने वाला कास्ट सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, देन नेक्स्ट क्लासेस, वैसा वाला द इनिशियल फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम हैज डिसॉल्व्ड टू सम एक्सटेंट. हर कोई इन आवर सोसाइटी इज नॉट फॉलोइंग दैट कास्ट सिस्टम. मैनी पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट सिस्टम. इट विल स्टिल टेक सम मोर टाइम फॉर एजुकेशन टू स्प्रेड, फॉर अवेयरनेस टू स्प्रेड अमंग दी सोसाइटी, बट धीरे धीरे वी विल सी conditions getting better over time, ठीक है. So these are those initial movements. बहुत important personality हैं इनकी, ये details please लिख के रखिए अपने पास, right. So ये बहुत आपको modern के answers, modern history के answers करने में बहुत help करेगी. So you must make the note of it, right. So now the next topic of our discussion is the Collective Security Treaty Organization. Again ये news में थी, so इसलिए it becomes important. So now this why was it in news? Basically because it is marking its 30th anniversary. इसकी 30th anniversary है इस organization की, that is why basically it was in news, right. सो ये है क्या? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस, 6 कंट्रीज के बीच की मिलिट्री अलायंस है. सेंट्रल यू नो आई मीन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मिलिट्री अलायंस बिटवीन 6 नेशंस. वो नेशंस क्या है वो आगे हम देखेंगे, राइट. इट्स ओरिजिन इज इन दी ताशकंद ट्रीटी. 1992 में इट ओरिजिनेटेड in the city of Tashkent. Tell me in the comment boxes where is the Tashkent city, किस country में Tashkent city है, right. The headquarters of this collective security treaty organization are in Moscow. Moscow means capital of Russia, so Russia में it is centered. You tell me in comment box where is Tashkent located. And the objectives of CSTO है to strengthen peace, to ensure stability, cyber security, regional security, ठीक है. इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने रीजन में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकें, पीस इस्टेब्लिश कर सकें, साइबर सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करें, टेररिज्म से फाइट करें, ग्रोथ पे फोकस करें. सो वही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे कोई कंट्री का, बाउंड्रीज चेंज ना हो, सोवरेनिटी मेंटेन रहे. ऑल दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CSTO. क्विकली टेल मी वेयर इज दिस ताशकंद सिटी. यू कैन नॉट आंसर दिस, इट्स वेरी कॉमन. इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री, ही वॉज यू नो इन ताशकंद व्हेन ही साइंड एन इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट, राइट. सो ये आपको देखना है. Now these are the member countries, 6 member countries we talked about. So it is Armenia, right, Belarus, then Kazakhstan. Kazakhstan is one member, then Kyrgyzstan, here it is Kyrgyzstan, ठीक है. And then we have the Russian Federation and Tajikistan. Tajikistan is also a member, and इधर यहाँ पे होगा आपका रशिया, that is here Russia, Belarus, Russia, Belarus, right. All these are the members of this place. Armenia is here.
These 6 आर दी पार्टीज। और ताशकंद आपने नहीं बताया है, तो यहाँ पे भी आप मैप में देख सकते हैं, ताशकंद इज इन उज्बेकिस्तान, राइट, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, डू ट्राई टू रिमेंबर इट, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट CSTO, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द मेंबर नेशंस, राइट। Now the next is WEFs, that is World Economic Forum's Alliance of CEO Climate Action Leaders। बस एक you know basically आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे the Alliance of the, oh just give me a minute, so the Alliance of CEO Climate Action Leaders, climate action पे conference has been conducted by World Economic Forum, right। so ये कभी क्वेश्चन में UPSC पूछ सकता है कि who which is the organization that is responsible for conducting alliance of CEO climate action leaders, तो उसमें आपको याद रहना चाहिए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि क्लाइमेट चेंज को रोके, डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट करें, राइट। डीकार्बनाइजेशन मतलब CO2 एमिशंस वगैरह को हम कम कर सके, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन डन, राइट। सो बस यही आपको याद रखना है कि ये अलायंस किसने कंडक्ट की है, WEF, दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। फाइनली अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगेन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स पे रिपोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंडेक्स कौन पब्लिश कर रहा है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको इवन आप इसका डाटा, यू मेक अ नोट ऑफ दिस डाटा ऑल्सो, यू कैन यूज इट इन योर टूरिज्म रिलेटेड आंसर्स। अगर कभी टूरिज्म पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में टूरिज्म कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इंडिया में टूरिज्म की सिचुएशन क्या है, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस डाटा, right। So travel and tourism index released by World Economic Forum, first point, right। Now it tells the competitiveness of the tourism sector of every country, right। अब इसकी observations क्या है, India has been ranked 54th, right। पहले उसकी रैंक 46 थी, दैट मीन्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, दैट इज व्हाई आवर रैंक हैज बीन रिड्यूस्ड, राइट। सो दैट यू हैव टू सी, एंड द टॉप प्लेस हैज बीन ग्रैब्ड बाय जापान, मोस्ट यू कैन से टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस, राइट, फॉलोड बाय USA, स्पेन, ठीक है। सो टूरिज्म से रिलेटेड आप ये कीजिए कि टूरिज्म इंडिया में क्यों नहीं प्रमोट हो पा रहा, व्हाट आर द reasons। This report you will get the reasons also, they tell very significant issues, let me just tell you those also briefly, you can use them in your mains answer writing। so issues in tourism sector of India according to this world report, they are safety of foreigners, सबसे पहले, ठीक है। आपने देखा ही है that many times foreigners come to India and they are raped or duped or looted, right। all of that comes in the safety, जहाँ जहाँ safety issues होंगे their tourist will never go, right। सिंगापुर में इतना टूरिज्म है, why, because they ensure this safety, they have CCTV cameras in the entire city, police is always on the patrol, अगर कुछ भी होता है with you, you will be complete, you know, constantly watched and police will be there instantly। इंडिया में तो आपको पता ही है, right। so because we are a huge population, so police population ratio is also bad in India, that is why India faces issues, but Singapore is a small nation, they have been able to, एक city जितना ही area है उनका, they have been able to cover the entire city with CCTV cameras and police भी efficiently work करती है, right। then sanitation, आपको पता ही है कि बाहर के देश कितने साफ सुथरे होते हैं, और इंडिया में वी हैव दिस इशू ऑफ सैनिटेशन, ऑल्दो नाउ वी हैव programs like Swachh Bharat, Amrut, they are all focused on improving the infrastructure and sanitation conditions, but this becomes a very important issue for the foreign travelers, right, sanitation। उसके बाद infrastructure for tourist businesses, so जितना भी जो लोग
टूरिज्म सेक्टर में बिजनेस खोलना चाहते हैं उनके लिए भी द प्रोसेस इज नॉट ईजी इन इंडिया. सो जितना ये कम बिजनेसेस होंगे उतना कम टूरिस्ट को फैसिलिटेशन होगी. दीज टूरिस्ट बिजनेसेस दे हेल्प इन ब्रिंगिंग मोर टूरिस्ट्स बाय क्रिएटिंग ईज फॉर द विजिटर. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो लैकिंग इन इंडिया. तो दीज आर द प्राइमरी कॉजेज. इसके अलावा भी बहुत टूरिज्म कम होने के कॉजेज हैं, तो वो सब आप रीड कर सकते हैं अपनी जर्नल रीडिंग्स में. So that is all basically for this discussion. If you still have some doubts, then you can post it in the comment box. We'll respond to that. Thank you so much for joining.